Good morning, everyone. Welcome to the morning conference. First, we will start with the derivative and technical update. Yesterday, Nifty traded with a bullish momentum on the monthly expiry day, as the index managed to close above 17,900 levels, which is a positive sign. A breakout above the previous high of 17,863 indicates that continuation of higher top and higher bottom formation. So now 18,000 levels should be the resistance for the Nifty, while support can be around 17,700 levels. If any intraday small correction can be viewed as an opportunity to add a long trade. So overall directional view for the Nifty is a positive only. The next update on the Bank Nifty 2 traded with the bullish momentum. So overall, if you see the continuous steep rise in the Bank Nifty, there might be chances of small correction or small profit booking. So we will advise to buy on declines level. So for the Bank Nifty, 43,500 will act as a resistance, while 42,500 will act as a support. If you see on the derivative data, Nifty futures witness a long build-up to the tune of around 7.36%, addition of 9.58 lakh shares. PCR stays at around 1.22 ratio, and maximum OI seen at 18,000 and 18,200 call option. While put option front 17,800 and 17,600 put option, which may act as a support level. On the Bank Nifty 2 witnessed a long build-up to the tune of 4.56%, addition of 1.26 lakh shares. Then PCR is a decline from 1.31 to 1.15 levels. Still, both the PCR is stay at above 1 levels, which is a good sign. Then maximum OIC in the Bank Nifty call option is a 44,000 and 43,500 call option. While in the put option front, 42,000 put on 42,000 put option. And now if you see on the rollover data, so April month for the Nifty rollover stood at 64.11%. And if we compare this data with 3 months average rollover, so 3 months average rollover was 73.5%, so which is a lesser, around 10%. And Bank Nifty at April month rollover stood at 81.67%. And if we compare this data with 3 months average rollover, so it is 88.49. So Bank Nifty rollover is also lesser than 7%. But the also one more data is there. The as per derivative data, 17,800 and 18,700 levels witness a heavy call buying. So there can be a one more buying momentum can be possible, strong bullish momentum can be possible. And if you see on the now FII segment, so FII sold around 7,238 contracts. So net short buy is a minus 20,034, and overall ratio is a 41%. On the cash segment, FII bought 1,652.95 crore, and DI also bought 97.07 crore. And on the stock specific segment, one can look for the ITC and Tata ELXC. So that's it from my end. Now I will hand over to Devang sir for further research update. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Shirija. Good morning, all. So first on Coforge. So Coforge reported a very good set of numbers. It was better than most of its peers. Its guidance is also higher at 13 to 16%, which is 800 to 900 BPS higher than its larger peers. So going forward also, their performance will continue to be better than its peers. And hence we are remaining positive on Coforge. And we have a buy rating on Coforge with a target price of 4550. Secondly, is on LTI Mindtree. So LTI Mindtree has reported weak numbers in Q4, and in Q1 also it is expected to be weak. However, they have said that they will grow double digit in FY24. We have conservatively built in 9.2% growth, and then a 15% growth for FY25. This will lead to revenue and profit CAGR of 12% and 15%. And hence, this coupled with recent fall in price has prompted us to maintain to upgrade the stock from hold to buy with a target price of 4975. The next update is on TechM. So TechM also reported very subdued numbers, and they are saying that even H1 FY24 will remain subdued. The deal wins are being also down around 26% QOQ and 41% YOY.
So, this will lead to a very poor revenue growth of 1.8% in FY24 for Techem. And their company's aspiration of 14-15% margins also seems difficult due to demand pains. Hence, we have revised our EPS estimates lower and will maintain our hold rating on the stock. Similarly, on Wipro also, they reported subdued revenue growth. Their revenue deal wins have remained robust, but it is not converting into revenues because discretionary spend is not materializing, and it is being impacted, and the order book is also made up of many discretionary spends. Going forward also, the company has guided very poor growth of -3 to -1% for Q1 FY24, which is indicating macro uncertainty. Hence, we have revised our EPS estimates downward by 7% and 2% for FY24 and 25, and we maintain our hold rating on the stock. Only solace in Wipro is that, the buyback that they have announced of 12,000 crores, which will support the stock price in the near term. In terms of Axis Bank, we are positive on the stock. The credit growth stood at 19%. This is because of Citi portfolio impact versus 15% YOY. Adjusted growth stood at 16% YOY, and asset quality has improved and stood at 2% versus 2.4%. There was only one-time impact of the Citi portfolio, which has led to the loss at the profit. However, PPOP has grown 42%, backed by lower cost to income ratio, and hence we are maintaining a buy rating on the stock with a target price of 1120. Similarly, Shriram Finance AUM growth is also improved to 15.9% versus 13.2%, led by growth in passenger vehicles and two-wheeler segments. Management has guided that 15% AUM growth for FY23 backed by MSME segment. Asset quality has also improved, and hence we are maintaining buy rating on Shriram Finance with 1710 target price. Indian Hotels has also reported a healthy set of numbers. Revenue rose 46%, EBITDA 66%, and profit to 55%. So the company is in a structural position where next 2 to 3 years they will have a healthy demand and capacity is not there. This bodes well for Indian Hotels. Surya Roshni also we are positive, and their pipes profitability was a beat in Q4 FY23. EBITDA per ton has jumped 76% YOY to 9868, and all its order books in pipeline division exceeds 8,500 million. Lighting and consumer durable sales witnessed a sales growth of 6.8%, and EBITDA increased by 23% YOY to 420 million. So overall, it is a healthy set of numbers, and based on our SOTP, we have arrived at a target price of 937, and we maintain a buy rating on the stock. Apart from this, we are also positive on Aircon. So that's it from my end. Over to you, Hitin. Good morning, everyone. Few more news updates from my end. So today on 20th April, there are a lot of news. So Ultratech Cement, SBI Card and Payment, CSB Bank, L&T Finance Holding, Mahindra Finance, Vedanta, Car Trade, Tech E-Mudra, Himadri Specialty Chemical, Ramkrishna Forging, Star Health, Tata Metallic. So these are the few results which will be coming today. So and SBI Cards and Payment. So which is a subsidiary of the SBI, is expected to release its financial result for the March quarter. As per the Bloomberg data, the company's revenue and the net profit for the quarter are projected to rupees 3,269.95 crores and 562.30 crores respectively. So even the trend as reported is number. The net profit was at 54.2 crore versus 0.16 crore year on year. The revenue was up by 64.3 crores at rupees 2,182.8 crores versus rupees 1,328.9 crores year on year. EBITDA was up by 50.8% at rupees 203 crores versus 134.6 crores year on year. Next is one Cable Kiran Clothing. This numbers, the Q4 numbers. The net profit was up by 27.3% at rupees
31.5 crore versus rupees 24.7 crores year on year. The revenue was up by 17.6% at rupees 199.5 crores versus rupees 169.6 crores year on year. EBITDA was up by 21.5% at rupees 39 crores versus rupees 32.1 crores year on year. Motilal Oswal Financial Services also reported their numbers. Net profit was down by 45% at rupees 164.7 crores versus rupees 299.6 crores year on year. And this NII was down by 10.8% at rupees 837.8 crores versus rupees 939.3 crores year on year. Few more news on this IRB infrastructure. The company has emerged as the selected bidder for the project of TOT of Nehru Outring Ring in the Hyderabad. So this should be as a positive news. HFCL, the company has bagged purchase orders of rupees 66 crores from retail research, from a Reliance Retail to supply optical fiber cables. So this can be a little bit of positive. PI Industries, the arm PI Health Science Limited is to acquire 100% stake in the TerraChem Research Medilab. This can be a positive. Redicant Cash Management Service, the BNP Paribas arbitrage has acquired 10.5 lakh shares in the company. Vedanta, the company chief Agarwal, makes zero debt pledge. Says we are very comfortable servicing the debt positions. So that can be a little bit positive for the Vedanta. Then the Aarti, so the net profit was up by 95.8% at rupees 4.7 crore versus rupees 2 crore. Revenue was up by 4.2% at rupees 157.8 crore versus rupees 151.4 crores year on year. The Dr. Reddy, as the company has got US FDA note for the top topiramate medicine, so this is positive. And LTI, then the revenue was at rupees 8,691 crores was the pole of 8825. Net profit at rupees 1,113.7 crore versus the pole of rupees 1153 crores is neutral. Surya Roshni has also reported a number. The profit is up by 87.9% at rupees 155.6 crore versus rupees of 82.8 crores. The revenue was down by 6.5% at rupees 2153.3 crores versus 2301.4 crores year on year. So ACC, the net profit was at rupees 234.7 crore versus the pole of rupees 289 crores. And then there was been one update on the US-India Council, the Atul Kashyap, who looks after this, the US business tie-up. So he has said that the bilateral trade has now grown up to 190 billions. So this has improved some jobs for the Americans. So overall, the net it says the tie-up was good, and it looks the trade data is coming positive. For HDFC Bank, the data said that the board of directors approved the appointment of Faizad Marucha as a deputy managing director and Bhavesh Zaveri as the executive director of the bank for the 3 years from April 19, 2023. And the HUL, the outgoing managing director and chief executive officer Sanjeev Mehta said that volatility will be banned only when overall FMCG market will grow in the mid-size digit. So he is quite positive on the overall market. And lastly, the HFCL. So lastly, there was the. So I think that's all from mine. I'll hand over to Hitendra for more Hindi updates. Thank you. Yeah, thank you, sir. Good morning, everyone. हम इस कॉल को एक बार हिंदी में करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्केट अपडेट के साथ. जैसे हम देख रहे हैं निफ्टी में 17,800 का लेवल निकाल दिया है. 17,900 के ऊपर भी हम अभी सस्टेन कर रहे हैं. तो आज की क्लोजिंग अगर देखते हैं, अगर निफ्टी क्लोजिंग 17,900 के ऊपर आती है तो एक शॉर्ट टर्म में हमें लगता है 1800 200 की तरफ निफ्टी को जाना चाहिए. 18,000 तक थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा.
मेन इसमें यही है जो हमने अभी इसमें जो बेस बनता हुआ देख रहे हैं वो 16,800 का एक बेस बन रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, उसमें से इमीडिएट बेस देखेंगे वो 17,500 का शिफ्ट हो गया। जब तक निफ्टी 17,500 यहाँ से नहीं निकालता है तो हमें लगता है कि हमें ऊपर बाय ऑन डिप जैसे स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए। यहाँ से अगर करेक्शन भी आता है 17,500 की तरफ से तो हमारे लॉन्ग पोजिशंस की तरफ ही ध्यान रखना चाहिए। हाँ, 17,500 एक बार निकाला तो हमें एक बार सोचना पड़ेगा कि हमें हमारी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन होगा जो 17,500 और 16,800 तोड़ने के लिए। जब तक नहीं है तब तक हमें ऊपर की रैली की तरफ ही कंटिन्यू करना चाहिए। जैसा भी अगर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी ने वापस 43,000 का लेवल खुदा दिया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। ये लेवल तक लास्ट टाइम भी इसने तोड़ा था जब अडानी और हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो वापस ये लेवल्स आना, तो मतलब ओवरऑल जो बैंक की पोजिशन और हम रिजल्ट भी देख रहे हैं सब अच्छे नतीजे आ रहे हैं। तो बैंकिंग वैसे देखा जाए तो स्ट्रॉन्गर है निफ्टी से। तो ओवरऑल वैसे अगर बैंक निफ्टी अगर आउट परफॉर्म करना चाहे तो 44,000 44,500 तक भी निकल सकते हैं। यहाँ से 1,100 पॉइंट एक बार अगर 44,600 का लेवल्स को निकाल पाए तो। और अगर हम जैसे कल देखेंगे एक्सपायरी हुई थी, तो ओवरऑल अगर हम एक्सपायरी देख रहे तो जैसे लास्ट मंथ की देखा तो बहुत हैवी थी। बैंक निफ्टी ने 91% के साथ क्लोजिंग दिया था, बट इस बार 81 है, तो 10% की एक्सपायरी में ओवरऑल देखा, क्योंकि मेन रीजन वही था आरबीआई का जो रेट कट था वो पब्लिक ने एंटिसिपेट कर रहे थे, रेट कट नहीं था जो एंटिसिपेट कर रहे थे, और उसी के चलते हमने बिल्डअप दिखे। अभी इस बार निफ्टी में देख रहे तो 10% की लोअर एक्सपायरी, तो लोग थोड़े स्केप्टिकल लॉन्ग्स की तरफ जाने के लिए 64% की ओवरऑल एक्सपायरी में हमें रोल ओवर दिख रहे हैं, जबकि मंथ ऑन मंथ एवरेज दिख रहे 3 मंथ्स का जो कि 74% है। सेम बैंक निफ्टी में देख रहे तो अप्रैल मंथ में देखा जाए तो 81%, जो 7% अपने एवरेज से नीचे है। तो ये पब्लिक थोड़ी सी जनता जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो उनको थोड़ा सा स्केप्टिकल लग रहा है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। बट हमें ट्रेंड फॉलो करना, अगर 18,100 18,200 के पास आता है तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग के आसपास रखना चाहिए। साथ ही हम न्यूज पे स्टार्ट करते हैं। हाँ, कोफोज के नतीजे के बाद कोफोज की जो मैनेजमेंट गाइडेंस है, उन्होंने कहा कि 30 से 16% के आसपास की गाइडेंस है और 800 से 900 बीपीएस हायर रहेगा, जो कि उनकी लार्जर पीएट है। और उनका जो मिड पॉइंट गाइडेंस है 14.5% है। तो हमें लगता है जो फ्लैट एबिटा गाइडेंस है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। बाकी ओवरऑल हमें लग रहा है कोफोज के जो रेवेन्यू गाइडेंस वो अच्छे रहेंगे यहाँ से आगे चलते हुए, और हमें लगता है एलटीआई 90 और उनसे बेटर या स्टॉक का स्ट्रॉन्ग पिक रहेगा कोफोज। एलटीआई 90 के भी नतीजा है, और रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है वो प्राइवेट रेवेन्यू जो उनका बाईपास रेवेन्यू थ्रू हुआ सर्विसेज थोड़ा सा फ्लैट था, बट उनका जो अदर रेवेन्यूज है वहां से उनके ग्रोथ आते हुए दिखी है। मार्जिन में देखा जाए तो 138 बीपीएस का मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो रेवेन्यू सीरीज 12% से 15% रहेगा FY23 से FY25 में। सो अगर हमें थोड़ा सा फॉल दिखता है प्राइसेस में तो हमें सेटलमेंट करना चाहिए। हमारा 4975 का प्राइस टारगेट रहेगा। टेक महिंद्रा के भी नतीजे रिपोर्ट्स अगर नतीजे देखे तो सबड्यूड ही थे ग्रोथ, क्योंकि मेनली स्लो डाउन डिमांड में था, और जो आगे जाते हुए हमें लगता है डिमांड सबड्यूड ही रहेगी। डिसीजन मेकिंग डील्स पे पाइपलाइन थोड़ी स्लो हो सकती है, और कंपनी डील जो वी है वो ऑल्सो भी डाउन टू 26% क्वार्टर 41% ईयर ऑन, जो कि 592 मिलियन के आसपास है। हमने थोड़ा सा हमारे रेवेन्यू एस्टिमेट्स को भी रिवाइज किया 1.8% से, और हमें लगता है कि एस्पिरेशन 14 से 15% मार्जिन रह सकता है। विप्रो के भी नतीजे देखेंगे लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में जो बुक टू बिल रेशियो 1.4x था, बट वो सब जो उसका जो रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा लगता है हमें सेकंड हाफ रहेगा, तो ओवरऑल FY24 लगता है हमें थोड़ा सा वो सुस्ती रहेगा विप्रो में। पर इसको जो सपोर्ट करेगा वो बायबैक 12,000 करोड़ का बायबैक इशू किया है उन लोग ने, और अप्रोक्सीमेटली 475 के प्राइस के साथ उन्होंने बायबैक किया गया है। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए विप्रो के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है। एक्सिस बैंक के भी नतीजे देखे, क्रेडिट ग्रोथ देखे तो 19% था। इसमें वन टाइम लॉस उन्होंने बुक किया, जो कि सेटल का पोर्टफोलियो जो उन्होंने लिया वो 1 मार्च से ले लिया, तो उन्हें सारा जो प्रॉफिट लॉस है वो इसी क्वार्टर में सेटल कर दिया है। और यहाँ से उन्हें लगता है कि जो एडजस्ट करके ग्रोथ आगे चलते हुए अच्छी अगर हम उसको निकाले गए तो 61% का प्रॉफिट उन्हें क्लोज किया गया है। एसेट क्वालिटी देखिए तो ग्रॉस एनपीए में 2% है, जो कि 2.4 थे, और आउटस्टैंडिंग जो कोविड रिसर्च एसेट उस पर भी हमें थोड़ा सा फॉलो ऑन देकर जो 0.3 से 0.22 आ गया है। एनआई भी हम देखिए 33% ग्रोथ थी, और एनएस में भी देखा जाए तो 4.22 थे जब वर्सेस 3.5। तो प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 42% था, और प्रोविजन 70% से डिक्लाइन हो गया है। श्रीराम फाइनेंस के भी नतीजे देखे गए, जो ग्रोथ है इंप्रूव हो गई 16% के आसपास, जो कि करेंटली 13% थी, और जो लेड है इसमें पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर सेगमेंट ने किया। मैनेजमेंट ने गाइडेड किया है कि 15% एजीओ मुझे लगता है आगे ले जाते हुए रहेगा। और ग्रॉस 3 GS3 एसेट देखा जाए तो 6.2% है, जो कि 6.3% के आसपास था ईयर ऑन ईयर। तो क्रेडिट ग्रोथ को आगे ले जाते हुए जो थोड़ा सा स्ट्रेंथ दे सकता है। एनआई देखा जाए तो फ्लैट थी, पर रेंज में हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता रहेगा 3 बीपीएस का। और लास्ट अपडेट हम देखेंगे सूर्य रोशनी का। सूर्य रोशनी ने कहा था
जो कि स्टील प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने बीट किया है, जो कि स्टील पाइप सेगमेंट में 76% का जंप देखा गया, जो कि 9868 का है, और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन वैल्यू प्रोडक्ट्स में भी देखा गया। उनकी जो ऑर्डर बुक है जो कि पाइप डिवीजन सेगमेंट में जो कि 87,500 लाइक में, कमर्शियल सेगमेंट्स की ग्रोथ देखी जाए तो 6.8% का है ईयर ऑन ईयर, जो कि 4310 है, और एबिटा इंक्रीज हुआ है 23% के आसपास ईयर ऑन ईयर, जो कि 420 मिलियन का है। इनकी जो नेट डेट सेट भी है 1.8 बिलियन से, और कंपनी एम कर रही है डेट फ्री होने के लिए अगले 2 साल में, गिवन जो स्ट्रॉन्गर इनकी एक्सपेक्टेड क्यू फॉर FY23 के पाइप मार्जिन है। हमने हमारे एस्टिमेट्स को भी 18% से रिवाइज कर दिया है, और सीट पाइप मार्जिन के लिए जो कि 18% से 10% है, और उसे SOTP बेस से हमने इसको जो 2760 को बढ़ा के 937 कर दिया है। तो हमारी बाय रेटिंग है स्टॉक को। So that's it from my end. Thank you again for in the morning call for the analysis.